I hope you all are doing good. Today in this video I have brought complete notes of poem Paryavaran Bachao from class 9th Karnataka. Explanation of the same I have already uploaded. You can take the link from the description box. So now let's start. First main is एक वाक्य में उत्तर लिखिए. Answer in one sentences. First question, आज किसको बचाने की मांग है? Who needs to be saved today? Answer, आज पर्यावरण को बचाने की मांग है. Today there is a demand to save environment. Next, जीव कब तक जगत में रह सकता है? How long can a living being live in the world? Answer, जीव तब तक जगत में रह सकता है जब तक जग में पानी और वायु शुद्ध है. So living being can live in the world as long as the air and water is pure. Next, कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? Whom do the poet talk to keep pure? Answer, कवि वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं. The poet talk about keeping the air pure. Then next, सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? What is this sandy soil called? Answer, सोंधी मिट्टी को रानी कहा गया है. It is called as a queen. Next, जीव जगत के मित्र कौन कौन है? Who is the friend of living world? Answer, जीव जगत के मित्र ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि है. The friend of living world is sound, that is noise, soil, that is earth, land, and jalvayu, climate, etc. So these are the friends of the world. Next, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? To solve what problem does the poet talk? Answer, कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं. He talks about solving the problem of noise and land, that is soil. Then next, कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? How many trees do the poet ask to plant for one tree? How many trees do the poet ask to plant for one tree? Answer, कवि एक वृक्ष के बदले 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं. So for one tree he asked to plant 11 trees. Okay. Next main is 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. Answer in 2 to 3 sentences. First question is, पर्यावरण का महत्व समझाइए. Explain the importance of environment. Answer, पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है. वायु, ध्वनि, मिट्टी सभी मानव के मित्र है. प्रदूषण बढ़ने की वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है. इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है. See, human life is impossible without environment. Yes, human life is totally impossible without environment. The air, soil, sound is friend of all living creatures, and the environmental balance is deteriorating due to increasing pollution, which has become a big problem. It is our primary duty to protect it, to save it. Okay. The next question is, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? What should we do to protect the balance of environment? Answer, परिसर की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है. हम सभी को शपथ लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए, वायु और पानी को स्वच्छ रखे, बिजली बचाए, ध्वनि प्रदूषण रोके, लोगों में स्वच्छ पर्यावरण की जागरूकता फैलाए. इस तरह हम परिसर की रक्षा कर सकते हैं. So to protect the balance of ecosystem, it is the utmost and primary duty of all living beings. We all have to make promise to ourselves to plant more and more trees
keep the water clean, save electricity, avoid noise pollution, and spreading awareness of clean environment among the people. So these are some of the ways to keep our ecosystem in balance. Okay. Then next main is जोड़ कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग. जग में पानी, मिट्टी रानी, मानव का जीवन, एक वृक्ष नित रोपेंगे, शपथ खाओ, समय की मांग. नेक्स्ट मेन इज खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. टुडे देयर इज अ डिमांड टू सेव एनवायरमेंट. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. विल रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस एंड सॉइल. ध्वनि मिट्टी जल वायु आदि जीव जगत के मित्र सभी. साउंड, सॉइल, climate, etc. are all friends of living world. They all are our friends. Then एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, will definitely plant a tree. Then next main is भावार्थ लिखिए. Here you have to write the meaning. ध्वनि मिट्टी जल वायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स. आंसर. कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि शोर, मिट्टी, हवा सभी हमारे मित्र है. इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है. ध्वनि और मिट्टी की प्रदूषण बढ़ती ही जा रही है, जो पर्यावरण के लिए एक समस्या है. इस समस्या का समाधान हमें निकालना है. सो द पोएट थ्रू दीज लाइन्स wants to give the message that noise, soil, air, climate all are our friends. Because of growing pollution, the ecosystem is disturbed very badly and has become a threat to all living beings. So it is our utmost duty to take care of our environment. If proper steps are not taken on time, then it will adversely affect our lives. Okay, so these lines means this. Then next main is शुद्ध रूप लिखिए. It means you have to write the correct spelling. Wrong spelling is given, you have to write the correct spelling. जीव जीव, वायु वायु, पानी पानी, it's पानी. कर्तव्य, मानव. So you got it. Spelling mistake is there, you have to write the correct spelling. Then next main is 10 पालतू जानवरों तथा पक्षियों के नाम लिखिए. Here you have to write names of 10 pet animals and pet birds. So first let us see the pet animals. बकरी, भेड़, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, घोड़ा, बंदर, गधा, बैल. So what are they? They are the pet animals. Goat, sheep, cow, dog, cat, buffalo, horse, monkey, donkey, ox. Okay, now we will see पक्षियों, birds. कबूतर, तोता, बतख, मुर्गी, खरगोश, मोर, हंस, गोरैया, बुलबुल, चील. Now what are they? Pigeon, parrot, duck, hen, rabbit, peacock, swan, sparrow, nightingale, eagle. Okay, now let's move on to the next main. तालिका में कुछ पेड़ पौधे के नाम दिए गए हैं, अलग करके लिखिए. Names of some trees and fruits are given in the table. You have to write them separately. So first we will write the names of
plants, पेड़ पौधे. तुलसी, नारियल, नीम, औदंबर, बरगद, पीपल. It's basil, coconut, neem, banyan, people. Okay, so these are the plants. Then fool, flowers name: gulab, chameli, surajmukhi, champa, genda. It is rose, jasmine, sunflower, champa, marigold. Okay. Then next main is पर्यायवाची शब्द लिखिए, synonyms. पर्यायवाची means synonym, same meaning but different words. Like vayu. Vayu means air, so you have to write other names of air like hava, samir, pavan. These all means air. Okay, meaning is same. Then jagat. Jagat means universe, world. Sansar, bhuvan, lok. Okay. Then next main is anurupta. Anurupta, this is a type of objective where you have to see the relation in the first pair and accordingly solve the second pair. See here, pani, jal. You have to see the relation of pani and jal, what it is. It is meaning. Meaning is given. Pani means water, jal means water. So you have to write the meaning of vayu. Vayu means air, pavan, hava. Okay. Then second, mera, hamara. Here singular plural is there. Like mera means mine, hamara ours, tera you, tumhara yours, me mine, mine ours, you yours, like that. Then 11. Here you have to write the number 11. 11 is given, we call 11. And 17, 17, 17. Then Sajiv, Nirjiv. Here opposite is given. Sajiv means alive, Nirjiv means lifeless. So this is opposite. So Janm, Mritya. Birth, death. Okay. It's very easy. So here we have done with all the mains, question answers, objectives, everything. I hope this video was satisfactory. If you liked it and if you want more such videos, then hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you. Till then, take care.